So, weaponizing of literacy means that you create literacy as an instrument by which select people can come up and they become your instruments for subjugation. And Baki at society at large did not have that access. Literacy percentage was very low at the time of independence, because of which there was displeasure, and then तभी तो education में reservation वगैरह देना पड़ा. But the education system was not changed to create a proper fair education system where people have access in general. There was never a time when intermarriage did not happen. धर्मशास्त्र में इतने तरह के इंटरमैरिज के लिस्टिंग है. अगर नहीं होता समाज में तो उसका लिस्टिंग ही नहीं होता. सो द बेसिक फैक्ट इज दैट इट हैपेंस एंड द Shastrakaras know that it happens. See, conversion happened en masse under sword point largely. So a lot of groups converted, clans have converted, villages have converted. So collectively जो भी जाता है और वापस भी आता है, they can intermarry. They don't have to essentially intermarry with the erstwhile Hindu. जो वापस आए हैं उन्हीं के you can create more jatis always. Challenge जब आता है, कब आता है? When individuals and freelancers come back. As individuals, not as families or groups. नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने सनातन घर वापसी फाउंडेशन बनाया है और उसका उद्देश्य है कि सभी जाति बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी साधु संत समाज से जुड़े हुए संत हैं उनसे पब्लिक कॉल्स घर वापसी के लिए करानी है। अब इस संदर्भ में कई सारे प्रश्न उठते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रश्न जो उठता है कि कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करके और जनरल ओबीसी एससी एसटी को एक कर देना चाहिए जिससे हिंदुइज्म और स्ट्रांग होगा। तो इस प्रश्न के साथ हम प्रारंभ करेंगे। आज हमारे साथ शंकर भारद्वाज जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। नमस्ते। तो सर, जैसे मैंने अभी बताया कि द फर्स्ट एबॉलिश कास्ट सिस्टम बाय यूनाइटिंग जनरल ओबीसी एससी एसटी थ्रू इंटर मैरिजेस, दिस मेक इंटरनली स्ट्रांग हिंदुइज्म। So internally strong Hinduism, it is assumed that this is what strengthens us against conversions. So Gharwapsi is not simply about stopping conversions out of Hinduism. It is about bringing the people back. So अभी जितने we have a very big percentage people based on our current की जितना हमारा अभी strength है उसके हिसाब से people are making the statements and programs. But if we look at the big picture, Gharwapasi cannot be limited to a specific region or specific country also. Even in the longer run, it can't be even limited to the current Bharat. इसके बाहर ही जाना है जो all the ravaged regions like Afghan and all that. Eventually, in the big picture, in the longer plan, we should be able to target all those regions and much wider also. So that firstly, this question assumes that we are in a defensive mode where we want to simply prevent conversions. That is not the idea. केवल रोकना। हाँ, रोकना उद्देश्य नहीं है। रोकना तो है. It is not as if we want to stop it artificially from happening. Because in a free society, people should be able to convert whichever way they want. जी। तो उनको हिंदुइज्म छोड़ना है तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं छोड़ना है उसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दूसरी वजह से. जी। जैसा कि देर इज प्रेशर, देर इज इकोनॉमी प्रॉब्लम, देर इज अदर एल्यूरमेंट, द इंसेंटिव सिस्टम इज क्रिएटेड टू कन्वर्ट. ये सब नहीं होनी चाहिए. फ्रीली पीपल शुड बी एबल टू मेक देयर चॉइस. जी। सो ये एजम्पशन दूसरा चीज भी बताता है कि it is assumed that because of this caste there is no unity, and because there is no unity, conversion is happening. Now, why would you want to convert because you don't feel unity with another group? It's not very logical. It can be used as a blackmail if somebody is trying to stop you from converting.
बट अदरवाइज आपका कन्वर्ट होना नहीं होना, इट इज इररिलेवेंट टू हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर एंड व्हाट डज यूनिटी इवन मीन। हम्म, सच में चर्च ही अलग अलग है, चर्च है, इतने सारे डिनोमिनेशन है, इतने सारे जातियों के चर्च है। तो ऐसा नहीं है कि देर इज वन मोनोलिथ वेयर एवरीबडी इज इंटरडाइनिंग, इंटरमैरिंग, ऑल दीज थिंग्स। जी। So this assumption is invalid that there is some presumed disunity because of which conversion is happening. Yes, there are some groups targeted. Groups are targeted because they are vulnerable. They are vulnerable because they have undergone certain level of subjugation. And there is historic narrative built up to put them under an impression that they have converted, they have been subjugated by their own people. And that is the misconception that honest researchers should be dispelling. अब इंडिपेंडेंट इंडिया में कितना ऐसा रिसर्च हुआ है 200 सालों का कि फैक्ट्स आर कमिंग आउट? हम्म, बहुत कम। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है, प्राइवेट में भी बहुत कम हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम वाज, व्हाट वाज द सिस्टम दैट एक्चुअली caused the subjugation? हम्म, अभी एक तो वी विल हैव टू गो इनटू प्री इंडिपेंडेंस, because anything that happened post independence has some causation in pre independence. So pre independence, first fact is the society was subjugated by the colonizer. हम्म, अब ये कॉलोनाइजर का कंपोनेंट पूरा ही निकाल दे तो ऑपरेशन किस पे आता है? समाज के ऊपर आ जाता है। तो जी। ऐसा पिक्चर क्रिएट होता है कि समाज ने खुद आपको, अपने आप को सब्जुगेट किया है। हम्म, इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता है। वाई वुड एनी सोसाइटी सब्जुगेट इटसेल्फ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रुप सब्जुगेट हुआ है, द एंटायर सोसाइटी वाज सप्रेस्ड। पूरा नॉलेज फंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरा हम्म, मिलिटरी गवर्नेंस, एवरी स्ट्रक्चर हैज बीन ब्रोकन डाउन, wealth, trade, everything has been broken down. Agriculture output suffered. In every way, the entire society was subjugated by a colonizer. Now, that colonizer has not simply subjugated us, he has created some oppressive structures. जैसे कि फ्यूडल सेटअप, ये फ्यूडलिज्म जैसे सिस्टम्स इंडिपेंडेंस के बाद भी देवर कंटिन्यूइंग। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत ये सारे oppressive structures have been removed. We can take one example. अभी everybody knows that under the British rule, जो जी। पुलिस थे हमारे ही थे, भारतीय थे, आर्मी वाले तो भारतीय ही थे, हम्म, बट दे वर यूज्ड एज टूल्स फॉर ऑपरेशन। जी। ना अभी जाके हम ये नहीं बोलते कि ब्रिटिश पुलिस में हमारे ही लोग हैं तो हमारे लोगों ने हमें अप्रेस किया है। एवरीबडी नोस हम्म, दैट द सिस्टम इज ऑपरेसिव, so whoever, whatever individuals have participated in it, participated because they were part of the system. You don't blame हम्म, those individuals. जी। The institution was working for an oppressor. Similarly, the feudal structures were acting to subjugate certain groups हम्म, under the crown, under the British. So post independence जो करना था, the primary objective for the state should have been to remove all these oppressive structures to ensure that all the oppressed groups actually come up। उनके ऊपर जो लागू हुए ये थे डिजेबलिंग स्ट्रक्चर्स जो थे वो सारे निकालने थे, जो कि नहीं हुआ। पार्टली कोशिश हुआ, बॉन्डेड लेबर एबॉलिश किया, ये वो किया, बट essentially all the oppressive structures have not been removed. Not only this was done, but there were a lot of Indian systems that were targeted by the state। जैसे कि जी। प्रिंसिपैलिटी को रद्द कर दिया, वो सारे राजा थे, वो तो they were not the oppressors, but that was abolished। And then caste discrimination was abolished, untouchability was abolished। So oppression of all forms, they tried to
abolish, but they did not take care of the institutionalizing of that oppression, which continued even after independence. तो उसके वजह से क्या हुआ है, the suffering of a lot of groups had continued. This is one aspect. अभी दूसरा aspect है, because of this weaponizing of literacy. हम्म। सो 1820 तक जो एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश लाया है, दैट हम्म। वाज मोर और लेस वेपनाइजिंग ऑफ लिटरेसी. एक एग्जांपल देता हूँ. हमारा नेटिव पुलिस फोर्स था 1850 60 तक. अच्छा। उसमें ज्यादातर लोग माला महर ये लोग ही थे, जो हम्म। गांव के बाहर रहते हैं. वो ग्रुप्स सिक्योरिटी ग्रुप्स थे. जब ये शुरू हुआ, देन ब्रिटिश स्टार्टेड है ब्रिटिश इंडियन पुलिस फोर्स. हम्म। उस पुलिस फोर्स में ज्यादातर लोग अपर कास्ट के थे. तो इसका रीजन क्या था सर उस समय? लिटरेसी. सो ऑल द हाईली एजुकेटेड वंस, और वो ब्राह्मण ठाकुर ये सारे लोग आते थे उसमें, अपर कास्ट लोग. और और पहले जब पहले जो रखवाले किया करते थे उसमें लिटरेसी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, वी हैड एजुकेशन इन अ वेरी डिफरेंट मोड. नो, लिटरेसी तो चाहिए नहीं. इंग्लिश लिटरेसी वाज हाँ। नॉट बेसिस फॉर आवर रिक्रूटिंग ऑफ पुलिस फोर्स. नो, आवर सिक्योरिटी अच्छा। फोर्सेस. इनफैक्ट अभी आप थोड़ा रिसर्च करोगे होते, ऑल द सरनेम्स, फैमिली नेम्स जो थे इनके, वेपन नेम्स थे, अच्छा। बिकॉज दे वर ऑल सिक्योरिटी ग्रुप्स. सो वो उनके हाथ से चले गए. लॉट ऑफ द ग्रुप्स एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ऑल्सो, देयर लैंड ऑल्सो, देयर प्रिविलेजेस ऑल्सो ओवर टाइम. सो ऐसे कई सारे वजह है, बिकॉज ऑफ विच a लॉट ऑफ ग्रुप्स हैव come down in their social position, their economy in every way. So weaponizing of literacy means that you create literacy as an instrument by which select people can come up and they become your instruments for subjugation. And हम्म। Baki at society at large did not have that access. Literacy percentage was very low at the time of independence, because of which there बिल्कुल। was displeasure, and then तभी तो education में reservation वगैरह देना पड़ा. But the education system was not changed to create a proper fair education system where people have access in general. हम्म। वो होता तो प्रॉब्लम सॉल्व होता. So removal of feudalism has not happened. Creation of proper education system has not happened. Because of which the bad conditions largely continued. हम्म। And then some groups actually came up because of reservations. Because reservations was created हम्म। for assemblies, legislative posts as well as education, and कुछ लोगों का access मिला था, but largely society did not have that benefit. So the displeasure in society kept rising even after independence. Now these are all reasons that we need to understand to ensure our systems are becoming fair. But हाँ। आफ्टर ब्रिटिश ने जब से वेपनाइज किया हाँ, ना, तब से सिस्टम ब्रोकन होना प्रारंभ हुआ। हाँ, हाँ, सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ है. और पूरा वेल्थ जो था वो तो ट्रेड का कम्युनिटी तो ये हो गया था. So military is gone, learning system is gone. So पूरा हम्म। entire society was reduced to servile functions, हम्म। just serving the British masters. और जब self governance आया, all these things were supposed to be corrected, and they were done in a very wrong way. In fact, largely not done. तभी तो it is taking us so long to come up. So instead of doing the right things, what they did, they created all these artificial mechanisms. So एक तो they have created their own caste system, OC, BC, SC, ST. हम्म। Which is not an Indian social order at all. एक इंसान एक जिंदगी में ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है. हम्म। This cannot be the basis for determining his group or caste as forward or backward. तो बिल्कुल। काफी आर्बिट्ररी हो गया. And on these arbitrary basis, whatever is created,
the privilege system. This has not favored the hardworking people. This has only हम्म favored appeasement politics. So now, just because you do intermarriage between OC and SC, let us say, how हम्म is this problem going to be solved? In fact, intermarriages happen. It's not as if they don't happen. But there is no logical reason by which you can say it will help. हम्म। At the time of independence, upper caste were 70%. According to government, majority of the country, 60-70% of the country is backward. BC, SC, ST. मैं समझा नहीं सर, दोबारा बोलेंगे आप, ये क्या कहा आपने? इंडिपेंडेंस के टाइम पे ठीक है, हाँ। रिजर्व्ड ग्रुप्स बहुत कम थे। रिजर्व्ड ग्रुप। हाँ, ठीक है। पूरा समाज तो अपर कास्ट ही था, अच्छा, सेवेंटी परसेंट समझ गया, हाँ। सो 70 साल में आपने समाज को पूरा अपर कास्ट से लोअर कास्ट बना दिया। रिजर्वेशन तो इतना बढ़ा दिया कि वॉट एवर, फ्रॉम 25 और समथिंग टू नाउ देर इज ए रिडिकुलस proportion of reservation in many places. This is on one hand. On the other hand, हम्म। you are saying that from a very poor country we have become the fourth largest economy. तो या तो वो झूठ है या ये झूठ है। Either the country is coming up हम्म। or the country is becoming backward. कौन सा सच है इसमें? दोनों तो नहीं कंट्री हो इज सकते। बिगिनिंग। हाँ हाँ। These illogical things, even on the face of it, cannot be the जी। basis for any meaningful policy making or actions. So keep this aside. Now, if we talk of हिंदू समाज, OCBC ये छोड़ के हिंदू समाज में इतने जातियां हैं, कुल है, संप्रदाय है, ऑल दिस डाइवर्सिटी इज देयर। इनमें अगर इंटर मैरिज हो तो क्या कन्वर्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? वो भी तो नहीं होगा। नहीं, लॉजिकली तो कन्वर्जन का इससे लेना देना नहीं है, इंटरमैरिज। एग्जैक्टली, वयमनस्य है इसकी वजह से जाएगा, वो भी एक बेकार आर्गुमेंट है। बिकॉज फॉर यू टू बी इन हार्मोनी विद अनदर पर्सन, इट डज नॉट मीन देर इज ए प्री रिक्विजिट हाँ। फॉर इंटरडाइनिंग और ऑल दिस थिंग्स। हाँ। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा फिर ये आइडिया उनके पास कहाँ से आया कि इंटर कास्ट मैरिज करने से हिंदुओं की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? ओके, ये, ये जनरेट कहाँ से हुआ? हाँ, ये आइडिया काफी पुराना है और इसके डिफरेंट वर्जन्स है ओवर टाइम दैट हैव डेवलप्ड। अभी जो हम्म। वर्जन है बिल्कुल वाहियात वर्जन है, वो छोड़ो। बट इंटर मैरिज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटर मैरिज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। देयर वॉज नेवर ए टाइम व्हेन इंटरमैरेज डिड नॉट हैपन। धर्मशास्त्र में इतने तरह के इंटरमैरेज के लिस्टिंग है, अगर नहीं होता समाज में तो उसका लिस्टिंग ही नहीं होता। सो द बेसिक फैक्ट इज दैट इट हैपेंस एंड द शास्त्रकारास नो दैट इट हैपेंस। ना उसमें अभी जो हो रहा है, एवरीबडी इज कम्पीटिंग टू बिकम बैकवर्ड टुडे। हाँ, सब लगे हुए हैं तो कि हाँ, सो शास्त्र में उल्टा है। एवरीबडी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू compete टू बिकम फॉरवर्ड। एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको पता मिलेगा। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 के थोड़ा पहले, हम्म। ब्रिटिश वर ट्राइंग टू गिव ए सेंसस एंड पुट ऑल दीज castes इन फॉरवर्ड बैकवर्ड। एवरी caste wanted टू बी लिस्टेड इन फॉरवर्ड। तो ये कब कब सेंसस पूरा था ये? सो अराउंड। 1931 में भी किया है, हम्म। उसके बाद भी किया है। All castes competed to be forward. No caste wanted to be listed as backward. Rich, poor, all this doesn't matter. Their own Samaj identity, everybody wanted that to be forward. कंपटीशन फॉरवर्ड की तरफ था, अभी कंपटीशन बैकवर्ड की तरफ बना दिया गया है बिकॉज ऑफ मिजरी हाँ स्कैवेंजिंग एंड मिजरी हाँ। सेंटर्ड पॉलिटिक्स। इंटर मैरिज पे आते हैं। बिकॉज शास्त्र के अंदर ये inherent incentive is there for people to compete to be forward, not backward. हम्म सो उसके वजह से एल्गोरिथम ऐसा है कि कुछ तरह की मैरिजेस ज्यादा इंकरेज्ड है, कुछ तरह की लेस इंकरेज्ड है। सो वॉट एवर इट इज, अभी तो इतना कंफ्यूजन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो इन टू दोज डिटेल्स, बट द एल्गोरिथम इज सच दैट द इंसेंटिव इज टुवर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड, बीइंग मोर हम्म सिविलाइज्ड। सो द कल्चर लेवल डिफरेंस होता है, तो द आइडियल मैरिजेस आर बिटवीन individuals and groups of similar culture levels. Difference ज्यादा होता है तो there are problems anyway, प्रॉब्लम्स। and those problems are solved in certain ways. Now we may have better solutions today, we can solve them, but it is idiotic to say that the individuals will figure out, हम्म because all this is not a matter of
isolated individuals, it is families, it is clans, it is an entire society working. So इसमें individual का atomize करके they should be able to live their life, then this whole discussion is useless. Then why are you talking of जाति? या तो आप जाति की बात करो, you take into consideration the fact that this society has diverse groups, जी। and then assume this will be the reality even going forward. हम्म। Or you want to not take cognizance of groups and deal with all individuals as individuals. So जो hypocrisy जो चल रहा है कि when it is convenient we will invoke groups, उसके वजह से all these confusions. So now intermarriage, रोटी बेटी व्यवहार जैसा कहते हैं, many regions have their own variants of this. There are different levels of engagement of groups. Some engage only at the level of their cordial relations, friendly relations, but their engagement, the depth of their engagement depends on whether they are sharing food in the same line, पंक्ति जो बोलते हैं ना, when they हम्म। eat in the same line, or whether they intermarry and all these things. And those are all. So each group looks at every other group in different levels of distance. Some groups that are very close, you do everything with them. Some groups you do only certain level of interaction. Some groups you have no interaction. This distance is not within locality. This distance is geographic also, cultural also. And this is natural anywhere. In जी। any society, this happens. But यहाँ diversity इतना ज़्यादा है कि it all looks discriminatory. Another important point here is because of the differences, very big difference in cultural practices and religious practices. They're all Gram Vastu, if you see, हम्म। each group is given a certain region so that जी। you are not interfering with the practices of others. Now, which is actually assurance of your space. हर किसी का अपना अपना जगह होनी चाहिए. This is not segregation. This is ensuring that everybody is given the space. अच्छे से कार्य करने के लिए। हाँ, जितना आपको फैसिलिटी चाहिए वो मिलना हम्म। चाहिए. ये जो है when the British urban system came, they started seeing this in a single urban rural scheme. So हमारा कैसा है? ग्रामा नगरा, महानगरा, पट्टना. Patana means port town. Then Vana. I say there is a continuity of civilization. Now this whole thing got disrupted when the British urban system was imposed. In fact, this was disrupted when the Muslim urban system came. So this you will find elaborate documentation by K.S. Lal. हम्म। Muslim Islamic State in India, Muslim slave system in India. He wrote many books. उसमें हम्म। how their urban system disrupted our social setup, he is documented. On top of the existing disruption, the British urban system created another disruption, because of which all the people outside the Mahanagara and Grama started suffering because उनका land privilege नहीं था. वो all these were if we do some survey, we will see how each group started suffering under the British. This also was not corrected, and resource management. इसका मेन फॉल आउट होता है रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स एक्सेस सफर होता है फॉर हम्म। मेनी ग्रुप्स लाइक वाटर, टेम्पल, बरियल, लैंड फॉर लिविंग एंड लैंड फॉर ऑक्यूपेशन. जी। All these things are not the same anymore. So a lot of groups actually got impoverished because of that scheme. We know obviously where did slums come from? We never had any slums. हम्म। Slums came after British came. जी। So I say a lot of people started suffering precisely because of these management. And now because of this, the culture distance increased between groups. And when that increased, they started following more strict rules to maintain distance, mutual untouchability, all these things. And this is complicated by feudalism. Feudal oppression meant that the land was commoditized, and then there are some landlords who are controlling the land and the revenue of that region. जी। Then obviously only some people hold, and then because a lot of produce goes as tax to the British. So ऐसा नहीं है कि राजा धार्मिक है और entire produce will be distributed among the people. You send more to the crown than you can spend on the development of the city. Many regions had water resources हम्म। which are meant for different purposes. मंदिर के लिए अलग होता है, कपड़े धोने के लिए अलग होता है. All the there were many water resources managed diversely for different purposes and different access levels. अभी ये सब जाके एक ही तालाब आ जाता है पूरा गांव के लिए.
then everybody has to compete for the same resource. That created another point of contention. And this was obviously not the case before British. So because of all these, whatever problems we see later on started appearing. So because of this, the demands for fair resource distribution, intermarriage, all these things started increasing. जी. Otherwise, for centuries, we had this various types of arguments about intermarriage, Roti-Beti Vyavahar and all that. But they were in a very different setup. We can't apply that into what we are seeing today in discourse. But Gharwapsi के context में रोटी बेटी व्यवहार is slightly different question. And this has two parts of the answer. एक है, see, conversion happened en masse under sword point largely. So a lot of groups converted, clans have converted, villages have converted. So collectively जो भी जाता है और वापस भी आता है, they can intermarry. They don't have to ओके. essentially intermarry with the erstwhile और Hindu. अब हाँ. जो वापस आए हैं उन्हीं के, यू उनके कैन बीच में. क्रिएट मोर जातीस ऑलवेज. चैलेंज जब आता है, कब आता है, व्हेन इंडिविजुअल्स एंड फ्रीलांसर्स कम बैक एज हम्म. इंडिविजुअल्स, नॉट एज फैमिलीज और ग्रुप्स. तब जो है रोटी बेटी नहीं मिलती है. बिकॉज, एंड अगेन दिस इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स. आई एम नॉट ब्लैंकेट सेइंग इट इज डिफिकल्ट. हम्म. बिकॉज मान लो कोई वेजिटेरियन है, कोई हिज करंट लिविंग कोड इज वेरी गुड, or हम्म. very good in the Hindu context. He will not have a lot of problem interacting. Roti beti problem नहीं होता है. Because you have gone into certain religion, you have started eating beef, ये वो है, तो then it is very difficult. रोटी बेटी छोड़ो, स्मशान भी problem है. So for this, there need to be graded solution where we create buffer jatis where all these things are made available. They can interact among themselves. And then हम्म. slowly over time, you induct them, initiate them into certain traditions where their practices start changing. Now look at इतने सारे लोग, हजारों लोग, हम्म. लाखों में भी हो सकते हैं, शायद है लाखों में, इस्कॉन प्रैक्टिशनर्स है दुनिया भर में. All of them after converting into Hinduism, इस्कॉन इनिशिएशन लिए थे, उससे पहले तो क्या क्या खाते थे. They have left all that. बिल्कुल. हम्म. सो उनका अभी जो कल्चर प्रैक्टिसेस है काफी बदल चुके हैं. सो विद इन वन जनरेशन ऑल ऑफ देम कैन एक्चुअली start interacting with Hindu groups. I don't हम्म. think Hindu groups will have any problem. So this is more of a culture level difference than stigma or anything. हम्म. I don't think there is a lot of stigma as much as this difference. And हम्म. then if you are forced to interact with somebody who has eaten beef, you will have a problem, हम्म. and vice versa. And then he will feel that you are discriminating against him. So this is not a necessary problem to create in the first place. It should be solved in a very harmonious way, where we give proper roadmap for the transformation of all these groups. Within 1 2 generations, you will see so much of change that you will wonder whether this problem existed in the past. But that patience needs to be there. It will not happen overnight, and the expectation should not be that it will happen overnight. एक्चुअली ये देखा जाए तो ऑल दीज क्वेश्चंस डिड कम अर्लियर. यस, आ गया. अर्ली 20th century, इट वाज द सेम सेट ऑफ चैलेंजेस. हमारे जितने भी लीडर्स थे, मदन मोहन मालवीय, सावरकर, हम्म. दे हैव looked at these questions. Even Tilak, they had difference of opinion, but eventually everybody had a longer plan. But the main challenge was that if all this transformation happens through the British, it will हम्म. never happen for the good result. ओके. So अभी जो है, if we don't have self governance, it is a problem. A self हम्म. governing society can easily incorporate transformations, reforms also. Sir, but there is a no system of conversion in Hinduism because every Hindu is born with a surname according to their caste and kundli and according to their birth. So how will we address this question? So firstly, it is false that there is no conversion. Historically, it is a fact that Hindus have gone and converted very In big populations. yes, yes, अभी जो मलेशिया, इंडोनेशिया, Malaysia, मिडिल Indonesia. ईस्ट है, we had a very big expanse. 15th 16th century, if you see, Hinduism was Hmm. present in a very big landscape. And all that did not happen without we going and converting. Hmm. But this is not denominational. We don't technically convert, we initiate. So the Hmm. दीक्षा जो भी देते हैं, दीक्षा के बाद नाम बदलता है. That fellow becomes part of a certain sampradaya, certain
tradition. हम्म, And then his practices change, his philosophy changes, all that. Now, the confusion about surname and Kundali and all that comes because we हम्म, don't have actually a good understanding of Hindu society. हिंदू सोसाइटी में आइडेंटिटीज कितने तरह के होते हैं? हम्म, इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटीज, इनफैक्ट कलेक्टिविटीज. जाति होता है या कुल होता है. कुल इज द स्मॉलर वन. जाति हैज हम्म, बिकम स्लाइटली अमॉर्फस. हम्म, देशा होता है. अभी अगेन देशा इज नॉट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इन द current republic, which is a bigger problem. We हम्म, will talk later. But Desha is a cultural unit. जी, Chera, Trilinga, Karnata, all these to Konkani, each has a unique culture, not just a language, but a set of हम्म, practices for that geography. जी, Then there is Sampradaya, जैसे वैष्णव शैव जो भी अद्वैत, ये सारे मिला के पहचान बनता है हर किसी का. हम्म, So you belong to a Desha, you belong to a Kula, you also belong to a Sampradaya. And wherever these challenges came, historically they have been addressed in a very organic way. For instance, बसवा जो संप्रदाय है, हम्म, जो कर्नाटक रीजन में काफी पॉपुलर है, it came by aggregating several kulas. That is where a sampradaya identity has assumed a bigger role than jati or हम्म, the desha. Multiple deshas, multiple jatis, people came together to forge a bigger sampradaya. When that happened, they have given up, they have compromised on their jati rules temporarily for the sake of a sampradaya rule which हम्म, overrules all. And that happens all the time. Even today, many people actually put their sampradaya above their jati. Places where sampradayas are very weak, jati assumes greater importance. That way, if we understand all this, ये जाति का जो जॉन्डिस है, it is as much not a reality as much it is a perception in people's minds. It is not as मतलब if पोर्ट्रेट everybody does हम्म, everything in his life because of his jati. जी, That's not how it is. It may be case in some places because the other units are very weak. You don't have a jati or sampradaya consciousness. Jati consciousness may be relatively higher. But हम्म, that is something you have to fix by elevating the other consciousness, हम्म, not by abusing the jati consciousness. जी, नेगेटिव वर्क से कुछ नहीं बनेगा. यू विल क्रिएट बिगर कॉन्शियसनेस, elevate the consciousness where harmony comes. Now, the other side of it is obviously traditionally conversions have happened, initiations have happened. Even today, a lot of non-Hindus keep becoming Hindus. हाँ, लाइक रामानंदाचार्य संप्रदाय के ही स्वामी जी हैं, वो भी अपने रिचुअल्स के अनुसार कन्वर्ट करते और हैं। हर संप्रदाय का अपना अपना सोल्यूशन होता है इसका. जी, And they already have it. It's not as if we need to invent these things. This is हम्म, more of a perception than reality that these are all blocking. Nothing is blocking जी, as such. What is blocking is the momentum for Gharwapsi has to pick up by giving the right incentive to the tradition. This did not happen in the past because the traditional preachers were persecuted. Even after independence, many people were killed, many Hindus. Lakshmanananda Saraswati Swami, many Hindu preachers are killed. So, under that, a lot of tolerant sampradayas have actually rolled back their Gharwapasi programs. हम्म, So अभी एक तो है, we have to ensure the enough protection to them and say that okay, you have the protection. State हम्म, ensures that you don't have you know this kind of persecution. Mughal time and British time that did happen. Our people could not go, whereas the other हम्म। people could come and convert. So थोड़ा level playing field we have to create with state support. That will remove this problem altogether. इसमें एक प्रश्न ये भी आएगा कि आपने वैसे ऑलरेडी इसको आप बता ही दिया है कि असाइन करने वाला भी उस ट्रेडिशन का पर्सन है हाँ, ना? और वो जाति भी डिसाइड वही करेंगे, जाति गोत्र जाति एंड। का पहले फर्स्ट क्वेश्चन वॉट एवर वी आंसर्ड, हम्म, उसमें जो भी लोग कन्वर्ट हुए हैं हम्म, उनके एर्स्टाइल जातिस तो है ऑलरेडी. जहां जहां ग्रुप लेवल कन्वर्ट हुआ है वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं. दे विल कम बैक. लेट अस से ग्रुप वन से गए हैं, ग्रुप वन हम्म, का एक रिफ्लेक्शन मिरर ग्रुप आएगा रिकन्वर्टेड ग्रुप. इट विल नॉट बी द सेम.
They may not हम्म। intermarry with the group one, but they will create their own mirror of group one and they intermarry. अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये भी है कि जैसे मिशनरीज के पास लॉट ऑफ फंड है, हाँ. उस फंड से वो स्कूल, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो चाहिए होती हैं वो उनको मुहैया This कराती is very partially true. पहले this was very much a reality. But today, if you see, majority of the funds for the missionaries are coming not from abroad. They are coming from within the country. There are many ways by which they have made their fund generation systems within India. Like हैं। जैसे उन्होंने ऑलरेडी स्कूल्स एस्टेब्लिश कर दिए हैं ना, schools है, schools generate money, definitely. क्या हॉस्पिटल्स। CSR से जितना आता है आता है. There is another. There are many ways, but take another example. अभी जितने चर्च चलते हैं, जैसे जक़ात होता है, हम्म। churches also, the pastors get a percentage of every person's salary who has converted, who goes to that church. Fundraising native बना दिया उन्होंने. Now it is not as if we don't have funds. We have funds. We have huge funds in the temples, temple lands, temple properties, all these things. अभी इन सर के ऊपर सरकार बैठा हुआ है. The government needs to let go the Hindu funds instead of sitting on them. If Hindu funds start getting used for Hindu purposes instead of the state controlling them, I don't think it will be a challenge for us to outdo हम्म। the enemy in terms of funds we have. आपने रोटी और बेटी का क्या करेंगे इसके बारे में हाँ. ऑलरेडी हमने इस Yes. पे चर्चा कर लिया है। देन लास्ट चीज है, नो नो नो, नेवर बिकम द थिंग यू वांट टू डिफीट, अदरवाइज इट हैज डिफीटेड यू। इससे क्या तात्पर्य है? इससे एक तात्पर्य तो यह है कि you don't have conversion, you don't do just like the enemy, but that's false. We have actually been originally the spreaders of dharma all over the world. Others copied us, हम्म। but others copied us in a bad way, so they are doing in a very intolerant and traumatic way. We had spread in a harmonious way, so our message to the world in 21st 22nd centuries will be: you see how tolerant people actually expand their ideas, spread their हम्म। ideas in peaceful ways. जी। So that's the message we are to give. So obviously, nowhere we are going to become what we want to defeat. हम्म। We want to जी। be ourselves, and that is the whole point here. डन सर, थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से और इतने अच्छे तरीके से हम सबको समझाया, विशेष मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वाला जो डेटा है कि पहले जातियों में हो फॉरवर्ड बढ़ने के लिए लगी रहती थी, बजाय इसके कि वो मिशन स्वयं आगे होने के को लिए. आरक्षण के लिए खुद को पिछले कैसे एससी में, जनरल से ओबीसी में, फिर ओबीसी से एससी में कितना जल्दी प्रयास कर ले लाने का। तो धन्यवाद सर, हम पुनः जुड़ेंगे एक बार। नमस्ते। नमस्ते.